Invigorating morning, everyone. If there's one person who teaches us values and morals after our parents and family, it's a teacher. Teachers are the only ones who shape our personality in such a way that we go on and bloom in future. Although times have changed, people are in quarantine, staying away from each other only to protect each other. Our love for teachers in this quarantine will never decrease. So I take immense pleasure in celebrating today's Teachers' Day. On a high note, I call upon the choir girls to sing the prayer song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलहितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमधरशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुगतां वरदा मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ॐ नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आहिर्यानं नमो ऊर्वजायानं नमो लोहेशवसाहूनं एषोपञ्चनमुपारो सौवर्पावपनासनो मङ्गलानं च सौवेशं परमं वै मङ्गलं नमो हरिहन्तानं Thank you, girls. That indeed created a spiritual vibe. Now I call upon Aditi of class 11A to address the welcoming speech. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. My warm welcome to everyone who are present here virtually. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. Let us proudly welcome all the teachers with a big round of applause. Celebrating Teachers' Day at school is one of the most finest memories from the school days. With no doubt, we can say that everyone will agree with it. Beginning to prepare to surprise our teachers with all the decoration along with elaborated plays, essays, and speeches is an event that leaves a mark in the memory. Let me take this opportunity to thank our teachers who have been working very hard to teach us online in this pandemic. As we all know, Teachers' Day is celebrated on the account of the birth date of Dr. Sri Sarvapalli Radhakrishnan, who dedicated all his life to education. Taking education to the next level this year may have given us many tough times, but our teachers have surely been a ray of hope. They say if there are no teachers, then all the other profession also would not exist. And yes, it is true. Teachers are the best guide anyone can have. They teach us more than just subjects. They are the source of knowledge and wisdom. From them leads the ideas and thoughts that one day each one of us will use to provide back into the society. In these tough times, I would like to thank all the teachers on behalf of each and every student for your selfless service and dynamic and unwavering support. Thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. We shall always be grateful to you.
I would now request everyone present here to sit back on their seats and enjoy the wonderful program arranged by the students of SBSM. Thank you. Well, all said and done, with a positive note, I call upon our school secretary, Dharmichand sir, to share a few words. Please, sir. Good morning to all the teachers. Happy Teachers' Day to all of you. Teachers are the second parent of the child who develops and guide them to become a good human being. I salute you all. Thank you for associating with SPSM. Thank you. Thank you, sir. That was indeed inspiring. Now, I call upon our school's correspondent, Paras Munot, sir, to enlighten us. Please, sir. Namaskar. Every year, 5th September, we celebrate as Teachers' Day. This being birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the best teacher of India. He became first Vice President of India. Subsequently, he became second President of India. We celebrate this day as Teachers and Gurus Day. I consider all the teachers as gurus. I bow and say namaste to all of you. Please accept it. Thank you. Thank you, sir. That was truly quintessential. Now, I call upon our school's principal, Swarnalata Gopalakrishnan, ma'am, to share a few words. Please, ma'am. गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई. This doha by the mystic poet Kabir Das actually roughly translated means that if God, that is Gobind, and the Guru, that is your teacher, are both standing in front of you, whom will you bow to before first? Whom will you respect first? So Kabir Das says, I would choose my Guru, my teacher, because my teacher is the one who has introduced me to God. In Indian culture, we give a lot of importance to the teacher, as all of you are aware. If you look at the epics, the Ramayana, the Mahabharata, you can see how much importance has been given to the Guru, the teacher. And this has continued even today. So I'm actually so proud to be a teacher. I would like to wish you all a very, 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 very happy Teachers' Day. Enjoy the day. God bless. Thank you. Thank you, ma'am. That was truly a touche. Now the time has come where the real program begins. Yes, everybody is excited for this. On that note, I call upon Abhinaya Shankar of class 12A to fire up our veins. Good day. It gives me immense pleasure to talk about teachers, the builders of the nation, the shapers of the destiny of every student, the creators of world-class resource personalities, and the greatness behind every great mind. As we live in a society which needs unity as the prime factor, those who understood this and led their lives are the legacy creators, becoming the torch bearers for the future generation to follow. One such greatness are the teachers who have the best minds in the world. Teachers' Day is the day that celebrates the transformative role of a teacher which they play in every student's life. Teachers' Day serves as a reminder for us to appreciate them for their services, which they will continue to render to every student and to the community as a whole. Further, it is the teachers who motivate us to do better in our lives. Thus, it recognizes their efforts to produce excellent artists, dancers, doctors, and more. We may not realize the power of simple words, as a thank you can go a long way. It's as we live in a fast-paced society, we forget to express our gratitude to one another. Thus, this Teachers' Day serves as the best opportunity for us to express our gratitude to our beloved teachers. Every day is a blessing because of my dear teachers. Their love and selflessness have made us grow and learn new things. Each day, teachers show up in spite of all the hardships they face, which they do not discuss about, only for us. Now, it's our time to tell them that we are here for them. Their experiences have made us wiser for the better. No token of appreciation can be enough to thank them for what they have done for us. If time spent with each one of us is nothing short of memorable, and we will continue to be indebted for shaping our personalities and making us a better human being. In short, though you all wrote in black and white, you brought colors in our lives. Once again, a very happy Teachers' Day. Thank you. Strap your seats, everybody. Now it's time for some music. I call upon the music girls to enlighten our ears.
கண்ணே கண்ணான கண்ணே என்னோடு சேரவா மண்ணான என்னை பொன்னாக மாற்ற நெட்டுள்ளே நீயும் வா எங்களின் பிழையை அழிக்க நீயும் ஏசராகினாய் உனதன் தோள் தந்து நான் ஏறி போக ஏறியாகினாய் மெழுகை போல நீயும் உருகியே ஒளியை தருகிறாய் அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என்னோடு சேரவா மண்ணான என்னை பொன்னாக மாற்ற நெட்டுள்ளே நீயும் வா கால்கடலின் அருகே கல்லினவே கிடந்தேன் ஒளி கொண்டு சிற்பம் செய்தாய் என்னை அறியாமை அகற்றி அறிவைதான் வளர்க்கும் அருள் கொண்ட உன்னை தெய்வம் என்றே உலகம் அழியும் போதும் கதிர் கிழக்கே நான் உயர்வும் ஊரடங்கு என்ற போதும் உந்த சேவை தினம் தொடரும் கவி எழுத முயல்கிறேன் உன்னை வாழ்த்த விழைகிறேன் தம்மை வாழ்த்த வயதில்லை என்று வணங்கிக் கொள்கின்றேன் கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என்னோடு சேரவா கண்ணான கண்ணே என் தெய்வ பெண்ணே என்னோடு நீயும் வா அறிவு திருத்தி அறிவுரை தந்து தந்தையாகினாய் அன்பை பொழியும் கருணை கொண்ட தாயும் ஆகினாய் அன்று குழந்தையாய் வந்த என்னை கலைஞனாகினாய் அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ அரரிராரோ ராரோ ராரோ அரரிராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே Thank you, girls. That was truly melodious. Now, there is a small surprise awaiting for you, teachers. Stay tuned. For all you give, for all you do, for working hard, for being you, for being there day in and day out. Thanks is what today is about. I'm thankful to all my teachers throughout my life. Once again, happy Teachers' Day to all my beloved teachers. Happy Teachers' Day. Thank you for teaching me how to read and write and for helping me to distinguish between what's wrong and what's right. For allowing me to dream and soar as a kite. Thank you for being my friend, mentor and ally. Thank you so much. Not only our teacher, you are our friend, guide, and philosopher, all molded in one person. Thank you for always supporting us. Happy Teachers' Day. You're not just a teacher to me, you're also an inspiration to me. Lucky to have you as a guide. Happy Teachers' Day. Great inventors and leaders are inborn. They are motivated to do such great things by teachers like you. Happy Teachers' Day. Thank you for all the hard work and efforts you have put in for educating us. Happy Teachers' Day to all our dear teachers. Happy Teachers' Day to all the teachers and the coordinators of SBSM, and a special thanks to our principal ma'am for giving us this wonderful opportunity to show a small gesture of gratitude towards our teachers. Well, that would have been truly emotional for you, teachers. So it was for us. Now, to get the program going, I call upon Ritika of class NE to give a speech in Hindi. Please.
सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 10E की यू रितिका हूँ। हमारे शिक्षक द्वारा किए गए अटूट और अनकहे प्यार और समर्थन के प्रति हमारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक चाइनीज़ कहावत है कि अगर आप एक साल के लिए योजना बना रहे हैं तो चावल बोएं, अगर आप एक दशक के लिए योजना बना रहे हैं तो पेड़ लगाएं, अगर आप जीवन भर के लिए योजना बना रहे हैं तो सभी को शिक्षित करें। इसलिए दोस्तों, शिक्षा हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। आइए हम सभी हमारे शिक्षकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम के लिए आभारी रहें। हम सब जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस को हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पर मनाया जाता है। हालांकि आपको मैं सावित्रीबाई फुले से मिलवाना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले हमारी भारत की पहली महिला शिक्षक है। सावित्रीबाई की जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी बाल विवाह हुई। उनकी विवाह जब वे 9 साल की थी ज्योतिराव फुले से हुआ। उनके पति ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। वे दोनों मिलकर सन 1848 में भारत की पहली महिला स्कूल का शुरू किया। समाज में अड़चनों और बाधाओं उनकी सफलता की ओर बढ़ती कदम बन गई। देखते ही देखते 1 से 18 स्कूलों का निर्माण हो गया। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत और विधवा पुनर्विवाह पर लड़ाई लड़ी। मराठी की कवयित्री थी वो, इसीलिए उनकी अत्यंत कविताएं शिक्षा की आवश्यकता पर आधारित थी। शिक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 2014 में पूना विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल की अध्यापक सावित्रीबाई फुले से कोई कम नहीं। भगवान हमारे सभी शिक्षकों को उनके निस्वार्थ कार्य और परिश्रम के लिए बहुतायत आशीर्वाद दे। अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं और मुझे इस शानदार अवसर देने के लिए धन्यवाद। Thank you, Ritika. That was a very good speech to listen to. Now, the time has come for real fun. The most awaited moment of the program has come. Now, I call upon the junior girls to set their stage on fire by their dance moves. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. ज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। ऋस्वरनन्दितश्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। परमकृपाय परहिताय कृतिनुत गुरवे नमः। दशशतवाद्यवेद्याय पूज्याय मद्गुरवे नमः। निगमाभरणे स्वरसिंहासने रागराजराजं तं वरगुरुं नमः।
सततं देहि अनवरतं मे आशिषं कुरु स्वरदेवि प्रसादं देहि गुरो गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः Words are not enough to express the gratitude and the love we feel towards you. Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, girls. That was indeed a fiery performance. Now I call upon Damini of class 10A to deliver a speech in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் என் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று ஆசிரியர்களின் சிறப்பை பற்றியே நான் உரையாட இருக்கின்றேன். ஒரு நல்ல ஆசிரியராக தனது இறுதி காலம் வரை வாழ்ந்து காட்டி மாபெரும் தத்துவ மேதையாக விளங்கிய டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாளான இன்று செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர் திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஒரு குழந்தையை முதலில் இந்த பூமிக்கு கொண்டு வருபவள் தாய். இரண்டாவதாக அந்த குழந்தையை சான்றோனாக்குபவன் தந்தை. மூன்றாவதாக அந்த குழந்தையை தன் எழுத்தாலும் சொல்லாலும் ஒரு மனிதனாக உருவாக்குபவரே ஆசிரியர். அதனால்தான் தெய்வத்திற்கு முன் 3ஆம் இடத்தில் ஆசிரியரை வைத்திருக்கின்றனர் நம் மூதாதையர். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான் என ஆத்திச்சுடியில் பாடியிருக்கிறார் ஔவையார். ஆசிரியர் எனப்படுபவர் இறைவனுக்கு சமமாக கருதப்படுபவர். மனித வரலாற்றில் பிரிக்க முடியாத மனித சமுதாயத்தின் அச்சாணியாக விளங்குபவர். வாழ்க்கை என்னும் படகில் மாணவர்களுக்கு ஒரு துடுப்பாய் துணை நின்று அவர்கள் வெற்றி கரையை அடைய உதவுபவர். ஒரு மாணவனை தன்னம்பிக்கை மிகுந்த மனிதனாக்குபவர் ஆசிரியர்கள் தான். இப்படி மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் தான் ஆசிரியர்கள் என்றும் போற்றப்படுகின்றனர். அத அறிவிக்க வந்த மாண்டவனா கானா காவன கீனா எங்க கண்ண திறந்தானா. இந்த பாடலின் வரிகளிலே ஒரு குழந்தையின் வாழ்வில் ஆசிரியர் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. மாணவ சமூகத்திற்கு தேவையான ஆற்றல், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி ஆகிய அனைத்தையும் அவர்களுக்கு கற்றுத்தந்து அவனை நல்லவனாக, பண்புள்ளவனாக, சிறந்தவனாக, அறிஞனாக, மேதையாக உருவாக்கும் உன்னத பணி ஆசிரியர் பணி என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. மீண்டும் ஆசிரியர் நல்வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Damini. Now the fun hasn't ended yet, teachers. Now I call upon class 12 girls to set the stage again on fire and we'll also get you dancing too. दिल मेरा पागल है जाना, इसको तुम बहला दो। दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। मस्तियों का ये समा है, सेलिब्रेशन वाली बात है। फिक्र किसको है जहाँ की, मैं तेरे तू मेरे साथ है। तो तुम्हें बन के बेफिकर जरा देख तो इधर, मेरी आंखों से सब टेलीकास्ट हो गया। जो तूने चमकीली कुर्ती सिलाई, मेरे माइंड में बज गई शहनाई। तो दिल मेरा, ये दिल मेरा, तो दिल मेरा ब्लास्ट हो गया। आंखों से टेलीकास्ट हो गया। ये दिल मेरा ब्लास्ट हो गया। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंग
Well, I'm sure teachers, the amazing performance delivered by our class 12 girls would have gotten up to your feet. Now, with a happy note, I call upon Mahalakshmi of class 11 to deliver the vote of thanks. Greetings, everyone. To the ones who keep us going, even when we don't believe on our own legs. To the ones who point the right star, even when all that we see around is just darkness. To the ones we all see the best in, even beyond just their teaching. Thank you for showing us life, living it the best way. I take immense pride and pleasure in sending my gratitude to all your teachers out there for everything you teach us, for everything you instill in us, and for everything you make us who we are today. I would like to extend my sincere gratitude to our management members and our principal, Ms. Swarnalatha, for giving us this opportunity, for making our teachers feel special on their special day. Most of all, I would like to thank all the students who work in bringing those smiles our teachers hold right now. Hearty thanks to all those of you who are watching this and making this Virtual Teachers Day celebration a very special one. Just a single day is never enough to let all our teachers know how much value they add in our lives. Thank you is no match to what they are to us. I wish all great teachers out there a very happy Teachers Day. We conclude our virtual celebrations with a hope that we brought huge smiles and happiness to all you teachers today. Once again, a very happy Teachers Day. Thank you.